So let's start with the session today. So we are on the laws of UX series. We learned 6 laws already in part 1, part 2. Today is part 3, where we are going to talk about 3 more very interesting laws of user experience. Okay. So these laws, as we learned, they teach us a lot of things. User experience कैसे design करना है? How does human psychology interact with user experience so that we can design products which are usable, which are friendly, which are easier to navigate and use? And we are also understanding user pains and motivations. तो user के peak experiences क्या होते हैं, user के motivations क्या होते हैं. Okay? So today we are going to talk about 3 very, very interesting laws. I'm sure you will like them big time. So just bear with me here. So they are called as following: aesthetic usability effect. Okay? तो कुछ लॉज का नाम उनके फाउंडर्स साइंटिस्ट के नाम पे है, कुछ लॉज का नाम उनके साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है. दिस इज वन ऑफ देम. Aesthetic usability effect and peak and rule are not named after their scientists, they are named after the function of the law, as we will learn. Aesthetic usability effect, then von Restorff effect. This is based on scientist's name. And also Tesla's law. Tesla's law, as you all can imagine, it's also based on a scientist's name, one who was the founder. So let's just jump right in. Aesthetic usability effect. Okay. Users often perceive aesthetically pleasing design as design that's more usable. एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट क्या है? एस्थेटिक्स का हमारे ऊपर डायरेक्ट असर होता है. एस्थेटिक्स हमारी आई को अच्छा लगता है. एस्थेटिक्स हमारे साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छा लगता है. लाइक वी आर लर्निंग दीज लॉज आर डीप इनग्रेन्ड वेज हाउ ह्यूमन ब्रेन्स वर्क, है ना. तो हम साइकोलॉजी को भी समझ रहे हैं. तो बहुत सही इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी, और ये सब एग्री भी करेंगे. जो चीजें अच्छी दिखती हैं वो डायरेक्टली अच्छा असर करती है ब्रेन पे, और हमें लगता है अरे ये अच्छी होगी ही, चाहे वो अच्छी नहीं हो, चाहे वो यूजेबल भी नहीं हो प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रोकन हो प्रोडक्ट. लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है, डिजाइन प्लीजिंग है, यूआई बहुत सुंदर है, तो हमारे मन पे एक इफेक्ट आता है कि ये अच्छे से यूज होगी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट. इसमें एक पूरा लॉ है. ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट इट इज. तो ये दिस इज इन्वेंटेड बाय हिताची पायनियर्स Masaki Kurosu and also Kaori Kashimura. So these are the 2 people who were part of Hitachi company, Hitachi Design Center specifically. And very recently, 1995, so they are both researchers in human psychology and they were assisting the company design. They invented this law. Okay, so they found the relationship between usability and apparent usability. Inherent usability and apparent usability. ठीक है. इनहेरेंट यूजेबिलिटी मतलब एक्चुअली यूजेबल कितना है, apparent usability मतलब दिखने से कितना यूजेबल है. Let's see some more ideas on this. I'll read the points directly. An aesthetically pleasing design creates a positive response in people's brains and leads them to believe the design actually works better. है ना. तो देखो एस्थेटिकली जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे पोस्टर्स हैं, अच्छे शॉप्स हैं, अच्छे वॉल्स हैं, अच्छे इंटीरियर होते हैं, अच्छे फूड होते हैं रेस्टोरेंट्स में, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, तो ये सब देखकर हमारे मन में, ब्रेन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ना. ऑलरेडी डोपामाइन रिलीज होता है, हम हैप्पी होते हैं, राइट. ट्रस्ट वर्दी बनता है वो प्रोडक्ट, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हम ट्रस्ट करने लगते हैं उस ठीक प्रोडक्ट पे. एंड वी इनहेरेंटली स्टार्ट बिलीविंग दैट द डिजाइन आल्सो वर्क्स बेटर. ये अच्छा चलता भी होगा, चलता है नहीं चलता है पता नहीं, बट अच्छा दिखता है तो हमारे मन को लगता है कि अच्छा चलता भी है. पॉइंट नंबर 2, पीपल आर मोर टॉलरेंट ऑफ माइनर यूजेबिलिटी इश्यूज व्हेन द डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज प्लीजिंग. अब देखो ये यहाँ पे ये इसकी साइकोलॉजी शुरू हो रही है. कितनी मजे की बात है ये. यूजेबिलिटी इश्यूज को भी लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली माइनर इश्यूज. तो माइनर इश्यूज लोग इग्नोर कर देते हैं इन द प्रोडक्ट्स when the design is actually good. Point. Visually pleasing designs can mask usability problems, as we learned, and prevent issues from being discovered in usability testing. तो इसका नेगेटिव पार्ट भी है. क्या नेगेटिव पार्ट है कि अगर आपने विजुअली चीज अच्छी बनाई है तो यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स मास्क हो जाती है, हाइड हो जाती है, छिप जाती है. ऑटोमेटिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. ठीक है. तो ऑटोमेटिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी बात की है कि हमारे अंदर 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे ब्रेन में. वन इज थिंकिंग फास्ट, अदर इज थिंकिंग स्लो. तो थिंकिंग फास्ट इज लाइक गट डिसीजन. तो एक सिस्टम है जो हमारा गट से सोच लेता है. किसी किसी डिसीजन के लिए आपका स्लो नेटवर्क एक्टिवेट होता है. स्लो नेटवर्क मींस फिर आपके ब्रेन विल कैलकुलेट, विल फाइंड द एवरेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो जो उसमें ब्रेन को मैच करनी है डिसीजन लेने के लिए, प्रोज एंड कॉन्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, किससे ले रहा हूँ, सारा कॉन्टेक्स्ट ब्रेन को समझना पड़ता है. जब गट डिसीजन पे आप बिलीव नहीं करते हैं, जब गट डिसीजन श्योर नहीं होता है पूरा, तो फिर ब्रेन का दूसरा पार्ट भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है. सो आई विल रीड द सेकंड पॉइंट. देयर आर 2 systems of thinking inside us. One is faster, which runs automatically and generates information based on intuitions, feelings, intentions and impressions. तो ये फास्ट है. इंट्यूशन से पता चल जाता है आपको, गट फीलिंग से पता चल जाता है, गट ब्रेन भी कहते हैं, फीलिंग से भी पता चल जाता है. द अदर सिस्टम ऑपरेट्स मोर स्लोली and requires mental effort
इट इज कॉल्ड अपॉन व्हेन सिस्टम वन रन्स इनटू डिफिकल्टी। तो इंट्यूशन होता है, रैशनल थिंकिंग होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्टिंक्शन में डायग्राम में भी दिया है, इंट्यूशन सिस्टम इज वर्क्स 95% ऑफ द टाइम्स, मींस 95% ऑफ द टाइम्स आप डिसीजंस जट से ले पाते हैं, और ये कैपेबिलिटी हमें दी गई है बिकॉज ऑफ दिस इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट पावर, गट ब्रेन आल्सो यू कैन से। इट इज अनकॉन्शियस, इट इज फास्ट, इट इज एसोसिएटिव एंड इट इज ऑटोमेटिक पायलट मोड। Whereas on the other side, for 5% maybe decisions, you will have to go to the slower brain also, and both systems may be involved because it takes effort, because it is slow, logical, lazy, and indecisive. Von Restorff effect. So, naam pe mat jao. This is based on a scientist name, Von Restorff, which we will go in 1 second to the origin of the law. Von Restorff effect. When multiple similar objects are present, the one that differs from the rest is more likely to be remembered. You will see the photo in your mind, but which shoe you will remember? Definitely the middle one, because it is standing out, because it is different, because it differs from the rest. तो भीड़ होती है, भेड़ें खड़ी रहती है, शीप्स खड़ी है, और बीच में एक लॉयन खड़ा है। ऐसा वॉलपेपर देखा है लोगों ने, राइट? तो लॉयन पहचान जाते हैं, लॉयन को याद रखते हैं, शीप्स को याद नहीं रखते, क्योंकि शीप इज ऑल आर द सेम, राइट? है ना? तो ये लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैसे स्टैंड आउट करना है, कैसे यूज करना है इस लॉ को, किन चीजों को एक से फॉर्मेट में रखना है, किसको स्टैंड करना है आउट, ये डिजाइनर के हाथ में पावर आता है इस लॉ से, है ना? यूजिंग दिस लॉ द डिजाइनर कैन अंडरस्टैंड मैं किसको हाईलाइट करूं। लेट्स सी द ओरिजिन। सो इट वाज नेम्ड आफ्टर आफ्टर अ जर्मन साइकाट्रिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, हेडविग वॉन रेस्टॉर्फ। तो ये एक लेडी ने डिस्कवर किया है 1933 में, जर्मन साइकेट्रिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, शी वाज अ डॉक्टर फ्रॉम जर्मनी, हेडविग वॉन रेस्टॉर्फ। उन्होंने ये डिस्कवर किया, शी प्रूव्ड दैट विद अ लिस्ट ऑफ कैटेगोरिकली सिमिलर आइटम्स, best remembered ones were distinctly different. So she did some experiments with patients and with students and other people with a lot of categorically similar items, and लोगों से उन्होंने फिर सर्वे लिए, and she talked to them, and after a lot of studies she found that the items that were different from the category, standing out, they were the best remembered by people. Okay, तो ये लॉ का origin हमने देखा. Now let's go into this. Thousands of years of evolution has given humans an incredible sophisticated system of vision and cognitive processing. तो ये जो thousands of years का evolution है ना, we have developed these prefrontal capabilities of sharp vision and cognitive processing and spatial vision very recently, है ना? Because of our survival instinct. Make important information और key action visually distinct. तो ये लॉ पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपके जो ऐप है, आपकी जो स्क्रीन है, उसमें जो की एक्शन पॉइंट है, जो डिजाइनर को हाईलाइट करना है, उसको ये लॉ को यूज करते हुए आप उसको हाईलाइट करो. डू नॉट हाईलाइट एवरीथिंग, डू नॉट हाईलाइट मेनी थिंग्स, हाईलाइट ओनली वन, मे बी मोर, वन और टू actions or buttons or points which you actually want to highlight, which you actually want to stand out. So use this law in your favor, especially for the designers and graphic and those who design in general. Point number 3, don't rely only on color or motion to communicate contrast. तो देखो ये भी एक नया पॉइंट है. तो हमें तो पता था कि सिर्फ कलर कलर से ही होता है, तो सिर्फ कलर और मोशन से नहीं होता है. डिजाइनर कैन टेल अस एक्चुअली. तो सिर्फ कलर और मोशन इज वन वे टू शो इट. When designing, design very carefully. So that you want to stand out, only that element should be highlighted using color, motion, contrast, font, styling, shading. Lots of ways are there to highlight the contrast. Okay, which you'll see. Okay, selective attention, banner blindness. तो ये क्या होता है? तो ये इस लॉ पे बेस्ड थ्योरी है, ये इस लॉ पे बेस्ड है. लेट्स सी व्हाट इट मींस. ऑब्जेक्ट्स विद इन आवर फील्ड ऑफ व्यू मे बी विजिबल बट वी डोंट ऑलवेज सी देम. ठीक है. अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. Selective attention tells we see only which is relevant to us. And third point is banner blindness. Blindness is where people tend to ignore elements that they perceive to be advertisements. Yeah, these are very, very interesting points. Let's talk about them. There is so much of garbage on websites कि हमारे ब्रेन अब ट्रेन हो गए हैं बैनर्स को इग्नोर करने के लिए. तो जितने भी बैनर चमक रहे हैं, जिंग जिंग कर रहे हैं, इधर उधर मॉडल खुल रहा है, बड़े बड़े स्क्रीन खुलते हैं, यस नो क्रॉस करते हैं, तो आप डायरेक्टली आपका हाथ क्रॉस पे जाता है. तो जो भी बैनर्स ब्लिंक होते हैं, जो भी बैनर्स हमारा अटेंशन खींचना चाहते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं. इसको बोलते हैं बैनर ब्लाइंडनेस. ये स्पेशली वेबसाइट्स के साथ होता है. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है. तो ये जो एग्जांपल है इसमें आप देखो काफी सारे बैनर्स खुले हुए हैं. तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बैनर हमारा ध्यान खींच रहे हैं. तो आप क्या करोगे, तुरंत आप स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे, बैनर्स को सबको इग्नोर करोगे. अब इसका प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर डिजाइनर को ये पता नहीं है, इफ द डिजाइनर इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फिनोमिना कि बैनर के लिए हम ब्लाइंड होते हैं, तो अगर वो इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेटिव चीज वो अगर बैनर की तरह प्रेजेंट करता है, जो एडवर्टाइजमेंट की तरह लगता है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे. करेक्ट. तो ये सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी है एंड बैनर ब्लाइंडनेस. ओके. थर्ड लॉ इज बेसिकली टेस्लर्स लॉ. टेस्लर्स लॉ इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट.
AKA also known as law of conservation of complexity. Okay, तो complexity पे दो laws हम पढ़ चुके हैं. पहले एक सबसे फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था Hick's law. I think the complexity should be reduced for the system, right? Break it down. Then second वाले में हमने पढ़ा था कि only 7 bits of information can be stored in basically Postel's law. और अभी Tesler's law भी complexity पे बात करता है. But this is something very interesting. This is not about making your system less complex, but it is a law to understand that how much complexity will still be there no matter how much you reduce it. Law of conservation of complexity. कंजर्व का मतलब हमने समझा था लास्ट में. कंजर्वेशन मींस सेव करना, बचाना, मिनिमलिस्टिक रखना. तो कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमलिस्टिक रखना. हटा देना क्यों नहीं कहा कि रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द सिस्टम. व्हाई? बिकॉज ऑफ टेस्ला's law. बिकॉज यू कैन नॉट रिमूव ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द सिस्टम. डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम सम कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज रिमेन. ठीक है, तो ए से बी तक जा रहा है. देखो यहाँ पे डायग्राम. तो ये ऐसे पूरा है ना, जिंगल जैंगल स्पाइरल, घूम फिर के भी जा सकते हो और नीचे एक स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हो. लेकिन नीचे की भी जो लाइन है उतना एफर्ट तो लेना ही पड़ेगा ए से बी तक जाने के लिए, राइट? स्ट्रेट लाइन भी है, लगभग स्ट्रेट लाइन है. सो ए से बी तक अगर आपको जाना है तो उतना एफर्ट तो लेना पड़ेगा. दैट इज मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम दैट यू कैन नॉट डिस्कार्ड एक्चुअली. दैट इज टेस्ला's लॉ. इसको समझो अच्छे से. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ complexity. For any system, there is a certain amount of complexity that cannot be reduced to zero, to be specific. Okay, this is designed by Larry Tesler, a computer scientist at Xerox. Xerox, we all know, I'm hoping, photocopy machine को हम Xerox नाम से भी जानते हैं काफी जगह पे. तो Xerox पार्क के ये एम्प्लॉई साइंटिस्ट थे. उन्होंने बनाया 1980s में. ठीक है, दिस इज वेरी रिसेंट एक्चुअली. ही वाज डेवलपिंग अ लैंग्वेज फॉर इंटरेक्शन डिजाइन. तो इन्होंने पूरा प्रिंसिपल्स और डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ही वाज क्रिएटिंग and he created with this inherent complexity law of conservation of complexity. Let's see the overview. All processes have a core complexity that cannot be designed away and so much be assumed by any system or the user. तो कुछ complexity रहेगी ही. Okay, it cannot, you cannot get away with it. You cannot just design pleasing system and get away with that complexity. कि मैं इतना अच्छा बना दूंगा कि यूजर को 2 स्टेप भी नहीं लगेंगे परचेस करने में, तो ऐसा नहीं होगा. There will be some level of complexity that will always remain. Second point, ensure as much as possible the burden of the user is lifted by dealing with inherent complexity during design and development. तो देखो इसमें क्या है, ensure as much as the burden of the user is lifted. तो आप complexity डिजाइन करते वक्त सिस्टम में सिंप्लीफाई करना है. डेफिनेटली सिंप्लिसिटी इज द की. Removing complexity is the key of a lot of systems, most of the systems, right? So designer will try to simplify, designer will try to design, designer will try to present a great usability experience to the user. लेकिन most of the complexity user से आप lift कर लोगे. What about the third point? Take care not to simplify interfaces to the point of abstraction. तो simplify करते 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 ऐसा हो जाएगा एक लेवल पे जाके कि then it becomes a very abstract screen or very abstract, very blank screen. It will become an anti-pattern. You will end up breaking a lot of these design laws, user experience laws. So you have to simplify the screen, but not simplify it so much that it really becomes abstract. Okay, so this is the overview of this law. तो देखो ये डिजाइन हमने देखा, ये दूसरे तरीके से वही डिजाइन है, ये हमने समझ लिया. लेट्स अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. Who should bear the burden of complexity within an application? ठीक है, डिजाइनर, यूजर और डेवलपर्स. इज इट गोइंग टू बी ओनली डिजाइनर और इज इट गोइंग टू बी डिवाइडेड अमंग दीस थ्री? तो देखो स्क्रीन जैसे आप एक बना रहे हैं तो उसमें तीनों लोग इन्वॉल्व है. एक डिजाइनर इन्वॉल्व है जो यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन बना रहा है. एक यूजर इन्वॉल्व है जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, जो आपका यूजर ऐप यूज करने वाला है. और तीसरा डेवलपर इन्वॉल्व है जो स्क्रीन को कोडिफाई करेगा सिस्टम में. तो तीनों को कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना पड़ता है. ये वेरी इंटरेस्टिंग है. तो कैसे हैंडल होगी? यू विल हैव टू डिवाइड द कॉम्प्लेक्सिटी अमंग दिस. यूजर के लिए मिनिमलिस्टिक रखना है. डिजाइनर एंड डेवलपर शुड इंटरनली हैंडल. While designing, we reach a point where it cannot be reduced. It's like the law of energy, but can only be transferred from one form to another. तो ये बहुत अच्छा point है. This is like the law of energy, है ना? This is the like energy cannot be destroyed. It can only be converted. Similarly, complexity, minimum complexity of the system cannot be reduced further. It can only be transferred. तो आप स्क्रीन कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो यूजर को एजुकेट करना पड़ेगा. स्क्रीन सिंपल बनाओगे तो डेवलपर को कोडिंग करते नहीं आएगा, है ना? तो अलग अलग जगह पे कॉम्प्लेक्सिटी उभर के आ जाएगी. कहीं पे एरर हैंडलिंग अच्छी करनी पड़ेगी फिर आपको. कहीं पे सीमलेस डिजाइन बनाओगे तो बॉर्न रेस्टोर इफेक्ट आ जाएगा. प्लीजिंग डिजाइन, एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट आ जाएगा. आप डिजाइन अच्छा बनाओगे लेकिन यूजेबिलिटी हाइड हो रही है उसकी वजह से, या मिस्टेक्स हाइड हो रही. सो अ लॉट ऑफ लॉज आर एट इंटरप्ले. इफ यू सी दिस एंटायर कोर्स ऑफ 12 laws, 11 laws are very very important to understand them each in their each other's perspective also. Okay, so with this I want to thank you.